स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी,
Screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions
in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Defoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker Maguire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड क्रोव, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली, स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Man Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 मिलियन. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Defoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker Maguire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड क्रोव, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली, स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Man Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 मिलियन. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Defoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker Maguire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड क्रोव, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली, स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date
April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Ziskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Ziskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He
adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड क्रोव, बेस्ड ऑन स्पाइडर-मैन बाय स्टैन ली, स्टीव डिट्को, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starring Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड क्रोव, बेस्ड ऑन स्पाइडर-मैन बाय स्टैन ली, स्टीव डिट्को, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starring Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड क्रोव, बेस्ड ऑन स्पाइडर-मैन बाय स्टैन ली, स्टीव डिट्को, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starring Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन
हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko,
Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Toby Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture Releasing, release date April 29, 2002, Man Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture Releasing, release date April 29, 2002, Man Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture Releasing, release date April 29, 2002, Man Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Diouf,
Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड को, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड को, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड को, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date
April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker McGuire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Ziskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker McGuire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Ziskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker McGuire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He
adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sam Raimi, screenplay by David Crow, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Crow. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sam Raimi, screenplay by David Crow, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Crow. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sam Raimi, screenplay by David Crow, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन
हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko,
Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Toby Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture Releasing, release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture Releasing, release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture Releasing, release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe,
Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड कोव, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली, स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड कोव, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली, स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starring Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को चंदा पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड कोव, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली, स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starring Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date
April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Ziskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Ziskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He
adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Crow, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Crow, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Crow, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन
हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker McGuire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker McGuire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2000, One Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker McGuire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Coe, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko,
Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Toby Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker Maguire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Jiskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Diouf, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Manville Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Diouf,
Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड को, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Man Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 मिलियन. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड को, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2002, Man Village Theatre, May 3, 2002, United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, box office $826.8 मिलियन. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्वागत करता हूँ. आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, directed by Sam Raimi, from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Jiskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the timed teenager Peter Parker McGuire who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process. आइए इस मूवी को शन्ना पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, स्क्रीन प्ले बाय डेविड को, बेस्ड ऑन स्पाइडरमैन बाय स्टैन ली स्टेव डिक्को, प्रोड्यूस्ड बाय लॉरा जिस्किन, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date
April 29, 2000 June 1 Village Theatre, May 3, 2002 United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वागत करता हूँ। आज हम स्पाइडरमैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। स्पाइडरमैन इज ए 2002 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो Spider-Man, directed by Sam Raimi from a screenplay by David Cobb. It is the first installment in the Raimi Spider-Man trilogy 2002 to 2007, produced by Columbia Pictures and Laura Ziskin Productions in association with Marvel Enterprises. It starred Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, and Rosemary Harris. The story follows the time teenager Peter Parker McGuire, who gains superhuman abilities after being bitten by a genetically engineered spider. He adopts the masked persona Spider-Man and begins to fight crime in New York City, facing the malevolent Green Goblin in the process। आइए इस मूवी को छन्ना पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय सैम राइमी, screenplay by David Cobb, based on Spider-Man by Stan Lee, Steve Ditko, produced by Laura Ziskin, Ian Bryce, starting Tobey Maguire, William Dafoe, Kristen Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris, cinematography Don Burgess, music by Danny Elfman, distributed by Sony Picture release date April 29, 2000 June 1 Village Theatre, May 3, 2002 United States, running time 121 minutes, country United States, language English, budget $140 million, बॉक्स ऑफिस $826.8 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।